So, hello students, let's talk about another interesting topic of chapter 4, that is solving the system of equations. We actually have got four different types of equations that can be asked in this, and this is an almost a sure topic. It's almost a certain topic to be asked in board examinations as a 6-mark question. So before taking up the topic, let's understand a basic multiplication of matrices. So what I have done here, I have taken a square matrix of order 3 by 3. I have taken a column matrix of order 3 by 1, and I have taken here a column matrix of order 3 by 1. अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ कि क्या बनेगा, a1x प्लस b1y plus c1z, that's it. Next will be a2x plus b2y plus c2z, and the next will be a3x plus b3y plus c3z. And what is there on the right hand side? d1, d2, d3. Now by equality of matrices, what do we actually get as a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. Isn't it a system of equations? हाँ जी, तुम्हारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गया. कितने वेरिएबल्स में? 3 वेरिएबल्स में. 2 इक्वेशंस को हमने 10th तक सॉल्व किया था, लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व कर रहे थे. यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आया, लेकिन कितने वेरिएबल्स में आ गया? 3 में. और इस सिस्टम में कितनी इक्वेशंस हैं? 3 में. सो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स इज बिट कॉम्प्लिकेटेड टास्क है. तो यहाँ पे हम मैट्रिसेस की बहुत बड़ी हेल्प ले सकते हैं. और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैं इसको रिवर्स वे में जाता हूँ. हमें जो क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का आएगा, राइट. तो जब भी मेरे पास कोई एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा हो, तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस. उसमें क्या बनेगा? जो पहली मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स बनेगी. ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ व्हाट? एक्स वाई एंड जेड. अगर आप देखें पहली इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट्स क्या है? a1 b1 c1. दूसरे में क्या है? a2 b2 c2. तीसरे में क्या है? a3 b3 c3. अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है उसकी जगह आप शून्य लिख दीजिए, राइट, 0 इन दैट प्लेस. फिर कॉलम मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट, एंड दिस विल बी द मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स दैट आर देयर ऑन द राइट हैंड साइड, राइट सर. इससे मिलेगा क्या और हम कर क्या पाएंगे? दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग. नाउ व्हाट आई डू हियर इज दिस थिंग विल बी गिवन टू मी. मैं इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करूंगा. मैंने इसलिए कन्वर्ट से समझाया कि हम इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं. आपने देख लिया, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यही बनता है. तो क्वाइट ऑब्वियस हम इसको भी इस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. जब मैं इनको ऐसे लिखूंगा, मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? एक्स वाई जेड. ठीक है, फिर मैं इनकी नेमिंग कर दूंगा. आई नेम दिस मैट्रिक्स, लेट वी से ए. आई नेम दिस एज एक्स एंड आई नेम दिस एज बी, राइट. अब मुझे क्या करना है? मुझे निकालनी है मैट्रिक्स एक्स. ठीक है, और मैट्रिक्स एक्स को किसने पकड़ के रखा है? मैट्रिक्स ए ने. और इसका मतलब मुझे ए को खत्म करना पड़ेगा. और जब आपको किसी मैट्रिक्स को खत्म करना पड़ता है, आपको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आती है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता. जनरली हम वर्ड यूज करते थे मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? I will write this word. Please remember, pre-multiply both sides by A inverse. अच्छा, एक चीज और है, A inverse कब एग्जिस्ट करता है? जब हमारे पास A क्या हो? नॉन सिंगुलर, राइट. दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A should not be equal to 0. तो जब मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स में चॉइस रह जाती है, प्री करना है या पोस्ट करना है. आप प्री करोगे क्योंकि जिसने एक्स को पकड़ रखा है वो एक्स से पहले आ रहा है. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई इट विद ए इनवर्स, इट विल बी
A inverse into A into X equal to A inverse into B. Right? Now, multiplication of matrices is associative. A into B into C is equal to A into BC. Right? So this is associative. तो मैं इसको क्लब कर सकता हूँ. I can write it as A inverse into A into X is equal to A inverse into B. और A inverse into A क्या होता है? I. So I of X equal to B. तो I into anything is the thing itself, matrix itself. So this will be. तो X को फाइंड करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत रहेगी? देखो A खुद जो मैट्रिक्स थी, X ये वेरिएबल आ गया, B ये ऑलरेडी B मुझे पता है, मुझे किस चीज की जरूरत पड़ गई? A इनवर्स की. और A इनवर्स के लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट सबसे आसान फॉर्मूला A इनवर्स निकालने का यही है ना? A इनवर्स इज 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. A हमें दे रखा है. सो अल्टीमेटली इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्वेश्चन में, ये टाइप 1 है, डायरेक्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम फटाफट गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, हम उसका इन्वर्स निकालेंगे और उसके इन्वर्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सॉरी उसके इन्वर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? बी के साथ. या आप कह सकते हो बी को प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स के साथ, जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल गिव अस द मैट्रिक्स एक्स. Right? Then by equality of matrices we will have the value of x, y and z. So for this I'll take up one example. So this is a matrix. What the topic we are doing is matrix method type 1. So there's a question given to us. The question is 2x plus 3y plus 3z equals to 5, x minus 2y plus z equals to minus 4, 3x minus y minus 2z equals to 3. Right? So he's asking us to solve the system of equations by using matrix method. So what will you do is, clearly you will write the system of equations can be written, can be expressed in matrix form as. The first matrix will be the matrix of coefficients 2, 3, 3. Next one will be 1, minus 2, 1. Next will be 3, minus 1, minus 2. 2, 3, 3, 1, minus 2, 1. 3 minus 1 minus 2. Next will be the column matrix. Next will also be the column matrix of constants. This will be the column matrix of variables. Let me name it as A, this one as X and this one as B. So you will write here A is equal to this, X is this, B is this. This implies AX is equal to B. You will simply write pre-multiply both sides by A inverse. इसका मतलब हो जाएगा x is equal to A inverse B. You need not to give the whole explanation, just write this thing and once you write pre, आपको पता चल जाएगा A inverse. ठीक है, B से पहले आएगा. यहाँ पे जो एरर करता है बच्चा हमारे पास, वो ये करता है AX equal to B and X equal to B A inverse, जो बिल्कुल गलत तरीका है. और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव नहीं होता तो आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर गलत हो जाएगा. हो सकता है बाद में मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही ना हो. राइट? सो इस चीज़ को कृपया ध्यान दीजिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन अ वर्ड प्री हियर. ठीक है जी. अब इस सारे सॉल्यूशन के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई? मैट्रिक्स ए की. राइट? सो फाइन. सिंस A inverse is 1 by determinant of A into adjoint of A. तो सबसे पहले आप निकालोगे डिटर्मिनेंट. 2, 3, 3, 1 minus 2, 1, 3 minus 1 minus 2. So this is expanded by first row only 2 into, this will be 4 plus 1, 5 minus 3 into 2 minus 3 will be minus 1 plus 3 into minus 1 plus 6.
that will be plus 5. This will be how much? 10 plus 3 plus 15, and this is 28, which is not equal to 0. So A inverse exists. Right, this is a non-singular matrix. Right, please do cross check it. 2 into 4 plus 1 is 5, minus 3 into minus 2 and minus 3. Sorry, this is minus 3 into this one. 2 minus 3 is minus 1, and 3 into this is 1 minus 1 plus 6 is 5. So you can multiply. This is 10, this is 3, this is 15, so 28 not equal to 0. Now we have to find adjoint. Since we know that adjoint of the matrix is the transpose of the matrix of cofactors, प्रोसीजरल अप्रोच क्या रहेगी हमारे पास? हम यहाँ पे माइनस निकालेंगे, राइट, फिर हम यहाँ पे कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर हम उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिखेंगे. बट सिंस वी हैव ऑलरेडी डन हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, so I'll find the adjoint directly, right? So you will be finding adjoint yourself in this case, and also adjoint of A will be equal to, so what is the first one? 4, this is 5, these are actually the minus, next was minus 1, next was 5, or what will be the M21, okay, second row first column gone, this is 3, this is gone, right, this is minus 6, then this is plus 3, this is minus 3, the next is M22, second row second column gone, minus 4, minus 9, minus 13, then second row third column gone, minus 2, minus 9, minus 11, M31, 3 plus 6, 9, then for this M32, so third row second column 2 minus 3, minus 1, M33, third row third column gone, minus 4 minus 3 is minus 7. Same change, same change, same change, same change, same, right? मैंने माइनर्स को रो वाइज लिया और उनको कॉलम वाइज लिखा तो डायरेक्ट एडजॉइंट हो गया. सो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/28 into 5, 3, 9, 1 minus 13, 1, 5, 11 minus 7. Right, sir? Now we have to find the value of x. x क्या था हमारे पास? x was, x is equal to A inverse B. So this is 1/28. इसको as it is ही रखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करिए, बाहर वाली डिटर्मिनेंट वाली जो वैल्यू है. So this is 5, 3, 9, 1 minus 13, 1, 5, 11 or minus 7. And then what is B? B was the matrix of constants on the right hand side, and it was 5 minus 4, 3. 5 minus 4, 3. So now what you do is you simply multiply these two matrices, right, to get the desired result. So this will be 1/28, 25 minus 12, 13, 13 plus 27, this is 40. The next one is what? 5 plus 52, 57 plus 3, 60. The next is 25 minus 44, and this is minus 21. So minus 44 minus 21 is minus 65. Minus 65 plus 25 is minus 40. So this will be now the scalar will get multiplied with every entry. So it will be 40 upon 28, 60 upon 28, and minus 40 upon 28. So what was the value of x? X, Y, Z. Matrix X was X, Y, Z. And what is this now? This is, if you want to divide, you can divide it. So you will divide it with what? 4. You will divide with 4. It will be 10/7. What about this? It will be 15/7. And this will be minus 10/7. You can cross check the answer. So by equating,
two matrices are equal if the corresponding entries are also equal. This is a matrix of order 3 by 1. This is also of order 3 by 1. X is equal to 10 by 7. Y equal to 15 by 7. Z is equal to minus 10 by 7. ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी. Once you get this value, you can verify them if you want to verify by substituting them in the equations. ठीक है. So this is how do you solve the direct questions based on matrix method.